Everyone. How are we doing? Great after the march? Fantastic. I like the energy. Okay, once again from Connecting Trust and from Rotary Club of Pune, Sarasbagh District 3131, I welcome you all to this beautiful gathering of hope and light. You know, it's amazing because the kind of numbers I'm seeing in front of me are just astonishing. Rainy Saturday evening. We have chosen to be here today rather than being with our families or friends. It speaks a lot for itself. Thank you so much, everyone, for joining today. Once again, welcome to this gathering. It's a precious, precious evening today for me, for you, for us all. And, you know, when I started this journey into the suicide prevention and mental health volunteering, I heard a story and which actually made a lot of sense to me today. There was a person who was working in the field of suicide prevention, and a question was asked, what do you get out of it? Why do you do it? Do you think any lives are saved because of that? And the person responded something which was very interesting to me, is that he said, I don't know about others, but for me, it is profoundly enriching. And I see that in the eyes of all of you today. So it's beautiful that all of you have gathered today here. Thank you once again. You know, mental health and suicide are not distant words anymore, right? We hear them. As informed citizens, we read about suicide and mental health also in the newspapers. Today, in such huge numbers we have gathered, speaks for itself. And ladies and gentlemen, this evening wouldn't have been possible without great, great support from Rotary International and especially Rotary Club of Sarasbagh. I would like to thank especially the Rotary Club to be here today. Rotary, you know, has always been joining hands with causes, and today their presence here speaks volumes. We are literally lighting the path together with candles. Thank you so much, Sumedha, and thank you so much, Alpana, for this. It gives me immense happiness to welcome our guest of honor for this evening, Dr. Sumedha Bhosle. Dr. Sumedha is a senior Rotarian, and she is also a director and CEO of Status Health Club. And my association with her actually goes a long way because my mother is also here. We both used to work out in her aerobics club. So I know you from that time. So Dr. Sumedha, I would request Dr. Sumedha to kindly say a few words. Good evening. It's a wonderful evening. It's very nice to see the energy, to experience the energy. Your courage and your compassion are the beacons for those struggling. It's indeed a great to stand, to march for the awareness of the mental health and support of the mental health. Basically, the candles might have faded off, but the impact of energy will shine bright for the years to come. You are making the change in the lives. I will like to congratulate you and your passion and your compassion, and again, I will say, keep on advocating the society for the mental health, and you are the light for them. Thank you. Thank you, Dr. Sumedha, for those kind words, and really, really appreciate your presence here and your contribution. With Sumedha, we also have Alpana with us, who is the First Lady, and who is also a senior Rotarian. Welcome, Alpana. Huge, warm welcome to you. The lady now I'm going to talk about doesn't need an introduction as such. She is the founder of Connecting Trust, and probably, I would say, the youngest in this room. Arnavas, I am not welcoming you, but I would like you to say a few words, please, on this occasion. Let me begin with saying, hi guys, lovely to see you all.
Wonderful, wonderful to see you all. Well, most of you know what connecting does, and I'm ever grateful to see so many youth here today. There were some that were just walking down the road and they said, "Can we join?" And we said, "Yes." Thank you very much to all the senior ones also and everybody who's joined here. My special thanks to Rotary, and thank you, Sumedha. Thank you all for being here. And yeah, I don't want to say much, but suicide 20 years ago when I started was a taboo. It was under the carpet. Nobody could talk about it. But guys, today open up, and especially the gentlemen, the men around, you should open out to somebody. Do not keep it inside. And at Connecting, we are all very good listeners. As you see here, Gayatri, who has done such tremendous work in organizing this candle march. Thank you, thank you. Yeah, she needs a big, I think later on you can give her a standing ovation because she's really done this all by herself. Thank you, thank you. Thank you, thank you. And thank you very much for joining us, really. And guys, you need anything? We need youngsters to join Connecting as volunteers. This is all volunteer driven. All volunteer driven. I've got a very handful of people in the office who are overworked, but they have dedicated their lives to it. Don't laugh, Vikram. Don't laugh. Yeah. But thank you very much. And volunteers is the backbone. So I need more volunteers. And thank you for being here today. Thank you, sweetheart. Thank you so much, Arnavas, for those kind words. It's all because of the people who have chosen to be here this evening rather than going anywhere else. So thank you once again to all of you. We also have Rotarian Sumed Gite with us, who is leading the Rotary-Rotaract relationship. Is that right? And who is also active and dedicated member of Rotaract Club. He's also the founder and CEO of Green Space Company of Industrial Packaging Solutions. Sumed, if I may request you to say a few words. Good evening, everybody. As ma'am rightly said, few years ago, the word suicide is a completely taboo. And today in the evening, with a lot of young people connecting, interacting, communicating with each other, I strongly believe when you talk to each other, there's an energy transfer that happens. And that helps the person who is suffering to help, to overcome, to make friends, make contacts. And this is the major impact that I saw today, ki what a great young people are came together, created an impact. So I would like to say to all the young people, let's come together and let's support for this cause and create a good impact, because unless and until we come together and try to speak more and try to create more connecting events like this, the ratio will be drastically dropped down. I would like to thank Rotaract Club of Alumni, Rotaract Club of Pune City Fortune, Rotaract Club of Kalyani Nagar and Rotaract Club of Ahmedabad Smart City for coming here together. And anybody who is willing to be a part of this young Rotaract community can connect to me or any other people. And I can tell to madam, after today's event, we will be connecting you for the future events. Thank you, Sumed, for those inspiring words. As we move on to the next segment, I would request the dignitaries to take your seats in the front row, and we would resume our program further. Yeah, just take this seats off. It's here, kadun taka. No, survivors. So the next segment in our program today
It may make us a little emotional because, you know, Connecting Trust does a lot of work for survivors of suicide. We listen to their pain. The kind of pain that they go through is simply unimaginable. The sharing that will happen on the stage now would be deeply touching, perhaps emotional for most of us, but it would also be profoundly human. I'm sure it will open the space where grief and resilience coexist. Let's hear, ladies and gentlemen, from a survivor of suicide. It's a testament to love and life. I would like to request Parag Balsaraf to kindly join me on the stage, and if he can share his story with us. Is Parag here? Okay, all right. So Parag is on the call. Let's move on to our next segment. We'll come back to the survivors later. Now, we are going to see something interesting because we are going to see a few of the Connecting volunteers performing in front of us. And let me tell you guys, these are not merely volunteers. These are the real heroes, real heroines, I must say, of Connecting, because they listen to the distress. They kind of deal with this pain pretty much every day. I would like to request Suhasini and her group to come on the dais and please perform the thoughtful skit. Wow! Yeah, what a gathering! Thank you so much. How are you all? Good, good. Hey, how are you? Hi. Hi, Suhasini. Wow, good. क्या चल रहा है यार आजकल? अरे क्या पूछ मत क्या चल रहा है? Everything is Louder, yeah. everything is fine. Huh. But did you see these days? So many suicide cases are going on. Oh yes. What is happening? पेपर भी खोले वही न्यूज ही होते हैं। हाँ। वो डॉक्टर के बारे में सुना है क्या? Oh yes यार, डॉक्टर होके भी देखो उसने कैसे सुसाइड कर लिया। क्या हो रहा है पता नहीं। और वैसे ही अभी कुछ महीनों पहले वो सीसीडी के ओनर ने भी तो सुसाइड किया। Oh my God, इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी सुसाइड कर लिया। नहीं पड़ता। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ ना, लोग सुनेंगे भी हमारी बात। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो। बिल्कुल बिल्कुल, Everything कोई is the डॉक्टर same. हो या वकील हो या बिजनेसमैन हो या और कोई भी हो, सुसाइड की समस्या तो सभी को परेशान कर रही है कि नहीं? ये Yes. क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? बोलो। इसको क्या हुआ भाई? अब इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ भाई? अब इसको क्या हुआ? 7 साल से हम साथ में थे। हम एक लिव इन रिलेशनशिप में थे और मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। मेरा तन मन धन सब उस पे निछावर किया। I broke all ties with my parents. I have no friends now. एक बार भी उसने मेरा विचार नहीं किया। I cannot live without him. My only option is to die.
is to die. देखा, ये भी अब सुसाइड करना चाहती है। अरे इसको क्या हुआ भाई? अब इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ भाई? अब इसको क्या हुआ? My parents want me to be a doctor, but I have a great desire to be a chef, and I love cooking. Both my parents are doctors. They have a flourishing practice, and they expected that I would just take it over. But I cannot bear the sight of blood. I cannot bear to see people suffering and in pain. It's just not for me. I really want to be a chef and do what my heart desires. But if I do that, my parents' dream will be shattered. They will be so disappointed. I am the only child, and if I don't take on their business, who will do it? I cannot bear to see the disappointment in their eyes. It's too much. I think I should just end my life. Suicide is my only option. देखा, ये भी सुसाइड की बात कर रही है। इसको क्या हुआ भाई? अब इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ भाई? इसको क्या हुआ? बताती हूँ। मैं जब पैदा हुआ ना, तब घर में बहुत खुशी आई। मम्मी ने तो कहा था घर का चिराग पैदा हुआ है, और पापा तो बोलने लगे मर्द का बच्चा पैदा हुआ है, मर्द पैदा किया है मैंने। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला, मुझे नहीं अच्छा लगता था लड़का बनना। मेरे अंदर कोई लड़की छुपी हुई है। मुझे फ्रॉक पहनना, मुझे लड़कियों के साथ खेलना, साड़ी पहनना, उनकी तरह बातें करना मुझे बहुत पसंद था। मम्मी को बताने की कोशिश करी मैंने। मम्मी ने तो ऐसे थप्पड़ जड़ दिया, और पापा को तो बता ही नहीं पाऊंगी। क्या करूं? स्कूल में सारा मजाक उड़ा के रख दिया, और अब कॉलेज में मेरा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे को। मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, लेकिन समझते क्यों नहीं है? नहीं समझते। मैं मर जाती हूँ। ये भी निकली मरने। इसको क्या हुआ भाई? इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ भाई? इसको क्या हुआ? शादी की पहली रात ही जानवर की तरह उसने मुझे नोच दिया, और उसके बाद आज तक हर रात वो दारू पी के आता है, तमाशा करता है, रोज मुझे मारता है, पीटता है, घिनौनी हरकतें करता है मेरे साथ, और रोज मुझे पैसे मांगता है। उसको तो गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, और उसके माँ बाप वो बस देखते रहते हैं। और मेरे बेचारे माँ बाप, उन्होंने तो अपने सब पैसे मेरी शादी में खर्च कर दिए। अब कहाँ से देंगे इसको पैसे? कौन देगा इसको गाड़ी? और क्यों चाहिए इसको ये सब? लेकिन मैं ये सब किसको जाके बताऊं? मेरा अब कोई दोस्त भी तो नहीं रहा। मैं किसी को जाके ये सब बता भी तो नहीं सकती हूँ। क्या करूं अब मैं? किसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। क्या करूं मैं? मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं तो बस मर जाना चाहती हूँ अब। अरे ये भी आत्महत्या करने निकली। इसको क्या हुआ भाई? इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ भाई? अब इसको क्या हुआ? क्या बताऊं मुझे क्या हुआ है? मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं तो ऑफिस ही नहीं जाना चाहती हूँ। वो मेरा बॉस जो है, वो मुझे गंदी नज़र से घूर घूर के देखता है। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मुझे कैबिन में बुलाता है और मेरे को यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता है। क्या करूँ मैं? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, और उस दिन तो अभी मेरे पीछे लगा है। कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ? वो कहता है एक रात मेरे साथ बिता, मैं तेरे को प्रमोशन दूंगा। किसको चाहिए ऐसी प्रमोशन? नहीं चाहिए मुझे। पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन ऐसे करके मुझे नहीं कमाना। मैं क्या करूं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं किसके पास जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? मुझे तो लगता है बस ये ज़िंदगी ख़त्म कर देती हूँ, ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। देखा, ये भी जीना नहीं चाहती है।
इसको क्या हुआ भैया? इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ भैया? इसको क्या हुआ? ते काका रोज घरी येतात, मला चॉकलेट देतात आणि मांडीवर बसून सगळीकडे हात लावतात. घाण वाटते. पकडून ठेवतात मला ते. आईला सांगायचा प्रयत्न केला तर आई म्हणते नाही, असं नाही बोलायचं. ते काका खूप चांगले आहेत, मोठे आहेत, बाबांचे मित्र आहेत ते. पण मी काय करू? बाबांना पण सांगता येत नाही बाबा काय म्हणतील. पण मला खूप घाण वाटते. मला ते सोडत नाही, मला पकडून ठेवतात. काय करू मी, काय करू? छी, मी मरतेच आता. ये बच्ची भी मरने चली. बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? पाहिलं, आत्महत्या करण्यासाठीची किती वेगवेगळी कारणं असू शकतात. त्यांना वाटतं त्यांचं ऐकून घेणारच कोणी नाही. उनको ऐसे लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझ रहा, बहुत अकेलापन महसूस करते. And they feel very depressed. Nobody cares whether I live or I die. But There is hope. कनेक्टिंग ट्रस्ट ही एक अशी संस्था आहे जिथं तुमचं म्हणणं विदाउट जजमेंट ऐकून घेतलं जाईल. तिथे तुमच्या भावना समजून घेतल्या जातात. And it's completely confidential. We offer emotional support. तर पाहिलं आपण किती किती समस्या आहेत. आत्महत्येची अनेक कारणं असू शकतात. आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला तिच्या वेदना संपवायच्या असतात, तिला जीवन संपवायचं नसतं. आपल्यापैकी अशी कुणाला समस्या जर असेल तर कनेक्टिंगशी अवश्य संपर्क साधा. कारण कनेक्टिंग है आपके साथ, हम सुनेंगे आपकी बात. कनेक्टिंग है आपके साथ, हम सुनेंगे आपकी बात. Ladies and gentlemen, huge round of applause. These are not professional actors. These are our volunteers. Big round of applause. Great appreciation for all of you. And really proud of all of you. These are all my friends, by the way. They are not actors. Okay. So, it's a pleasure. And it's also why Connecting Trust is so relevant and so inclusive, is because it's not only our volunteers but also other colleges who have joined us today. And one of such college is Symbiosis College of Nursing, SCON as the acronym says. And really grateful for the support that they have extended, and really amazing that they have joined us in such a huge number. The head of the Department of Symbiosis, unfortunately, she could not make it today, but our deep thanks to her. And now, the Symbiosis College of Nursing students are also going to perform a small skit in front of us. These students, by the way, I personally feel the profession like nursing is very relevant and will thrive in future in the world of AI today. Because you see here, there is human touch. Yeah? It's not mechanical. It's operated from emotions. So people need it. And I'm sure that the students of nursing have a great future. Thank you for joining, and I invite you to perform your skit.
बोल तो है, let that person be in front. They all have come from Lavre campus, ladies and gentlemen. Huge round of applause for them. It was not easy. नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। सिम्बायोसिस के छात्र आए हैं नाटक करने, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। सिम्बायोसिस के छात्र आए हैं नाटक करने, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। नमस्कार मंडळी, आम्ही सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ नर्सिंगचे BSc नर्सिंग 3rd इयरचे विद्यार्थी आज तुमच्यासमोर 2 पटनाट्य मांडण्यासाठी उपस्थित आहोत। तर आपल्याला माहीत आहे 10 सप्टेंबर हा दिवस आपण दरवेळी आत्महत्या प्रतिबंध दिन म्हणून साजरा केला जातो। तर आपण आज 2 अशा गोष्टी पाहणार आहोत जे आपल्या आजूबाजूला घडतात। तर पहिली गोष्ट आपण पाहणार आहोत एका विद्यार्थ्याची। और पहचानता है क्या इसे? अपना जूनियर है यार। क्या हो गया भैया? ये जूनियर है अपना। क्या हो गया भैया? तू इसे पहचानता है क्या? हाँ, अपना जूनियर है। ऐसा? क्या नाम है तेरा? रोहन भैया। रोहन? हमारा क्या नाम है? पहचानता है क्या तू हमें? नहीं भैया। भैया भैया बोल रहा है। भैया बोल रहा है तू हमें? तू क्या बोलना चाहिए हमें? क्या बोलना? हम तेरे सीनियर है, तू क्या बोलेगा हमें? भैया मेरे को नहीं पता भैया। आज से तू हम लोगों को सर बोलेगा। ठीक है सर। इतना आकर के क्यों खड़ा है? सीधा खड़ा रे। और ये भोली शक्ल, इतनी बाल ऐसे है तेरे। क्या यार, बोर हो चुका हूँ यार। कोई एंटरटेनमेंट चाहिए मुझे यार। तुझे एंटरटेनमेंट चाहिए? इसे नचवा दे। नहीं भैया, चिकनी चमेली गाना है ना उसका। भाई दुपट्टा देते, नचवा देते इसे। नहीं भैया, भैया नहीं। ज्यादा बोलेगा ना कान के नीचे बजा दूंगा। गाना मैं बोलेंगे? गाना मैं करता हूँ। ठीक है। लिपस्टिक लगानी है। ठीक है। वो चिकनी चमेली वाला। चिकनी चमेली वाला। ठीक है ठीक है। तो अभी 3 बोलने पे तू नाचेगा। नाचेगा तू। चिकनी चमेली, चिकनी चमेली। अरे अरे मम्मी मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे को पूरे कॉलेज में मेरे बहुत बदनामी की, मेरे सीनियर से मेरी रैगिंग की। मम्मी क्या रैगिंग की? क्या होता है ये रैगिंग? बहुत तंग किया मम्मी मेरे को पूरे परेशान करता है। मेरे को पूरे कॉलेज में मेरे सामने बेइज्जती की, मेरे को लड़कियों की तरह नचवाया, लिपस्टिक लगवाया। तेरी पढ़ाई में इतना पैसा लगा रहे, तुझे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, तू क्या यहाँ नाच गाना कर रहा है वहाँ पे जाके? मम्मी हम नहीं समझ रहे। मम्मी क्या नहीं समझ रही? मैं समझ रही। हम कैसे कैसे करके पैसा कमा रहे हैं, तेरे ऊपर लगा रहे हैं, और तू ये सब नाच गाना करने जा रहा है वहाँ पे? मम्मी आप मेरी नहीं समझते, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। अरे क्या करूँ मैं जीवन का? मेरी मम्मी भी मेरी नहीं सुनती, कोई दोस्त भी नहीं है मेरा। मैं किसके पास जाऊँ? मैं किसको अपने हाल सुनाऊँ? कॉलेज में जाता हूँ वहाँ पे भी सब चिढ़ाते हैं। क्या करूँ मैं? इससे अच्छा कि मैं मर जाऊँ। ये चाकू से अपनी जिंदगी खत्म कर देता हूँ। अरे अनमोल बेटा तू क्या कर रहा है? ये पागल हो गया है क्या? तू अपनी माँ के बारे में तो सोच एक बार। तेरे बाबा मेरे क्या होगा बता? मम्मी मेरे को बहुत प्रेशर है मम्मी, मैं नहीं समझ पा रहा, मैं क्या करूँ? क्या प्रेशर है बेटा? मेरे को बता तो सही, मैं समझूंगी ना, मैं हूँ ना तेरे सपोर्ट। आप नहीं समझोगे, मेरे पूरे कॉलेज में मेरी बहुत बदनामी करते, मेरे को नहीं अच्छा लगता। क्या बदनामी बेटा? ये हार जीत, ये पास फेल, ये सब तो लगा रहता है। ये थोड़ी कि तू आत्महत्या कर लेगा। मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना, हम जाएंगे काउंसलर के पास, मेरी रैगिंग करेंगे, तेरी टीचर से मैं कंप्लेन करूंगी, हम चलेंगे। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी। खाना खा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तू खाना खा और रेस्ट कर। ठीक है मम्मी। जैसा कि आपने देखा कि रैगिंग एक गंभीर समस्या है जो कॉलेज में जूनियर के साथ सीनियर करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें कॉलेज के अंदर प्रॉपर काउंसलिंग रखना चाहिए और अपने उनके माँ बाप अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम उनसे पूछना चाहिए कि उनके साथ क्या चल रहा है कॉलेज में, और उनको प्रॉपर काउंसलिंग के लिए हर मंथ में भेजना चाहिए। तो आगे देखते हैं नाटक के।
या रॅगिंगमुळे विद्यार्थ्यांना ताणतणाव वाढतो, त्यामुळे आपण कॉलेज आणि शाळेवर स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेतली पाहिजे विद्यार्थ्यांवर. तर आता आपण पाहणार आहोत दुसरी गोष्ट, ती आहे एका वृद्ध शेतकऱ्याची. जी आप अबू ज़र हैं? जी मैं अबू ज़र हूँ. जी मैं बैंक से आई हूँ. आपने 2 साल पहले 2 लाख का लोन लिया था बैंक से, अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट उसका पे नहीं किया है और ना ही आपने किसी बैंक के नोटिस और कॉल का जवाब दिया है, क्यों? जी मैम, इस बार जो है ना वो खेती नहीं हुई है. खेती बाढ़ की वजह से सारे फसल जो है ना वो बर्बाद हो चुके हैं. सो मुझे आप कुछ क्षणों का टाइम दे दे, जिससे मैं आपका सारा लोन चुका दूंगा. आपको पता है ये करना क्या हो सकता है? इसकी वजह से हम आपकी पूरी ज़मीन जब्त कर सकते हैं, इसकी वजह से हम आपका पूरा घर लॉक कर सकते हैं, आपके पूरे बैंक अकाउंट को बंद कर सकते हैं. क्यों नहीं किया आपने ये? प्लीज़ मैम, आप मुझे 2 दिन का टाइम दे दें. मैं अपने बेटा से बात करके आपको मैं सारा पैसा चुका दूंगा. नेक्स्ट टाइम अगर आपने 2 दिन में पे नहीं किया इंटरेस्ट, तो मैं नेक्स्ट टाइम पुलिस के साथ आपके घर आऊंगी. ठीक है मैम. हेलो. हाँ बेटा सुनना. हाँ पापा बोलिए. मैंने बैंक से 2 लाख का लोन लिया था और उसका मुझे पैसा देना है. क्या तू मुझे 2 लाख रुपया दे सकता है क्या? आपने पूछा था लोन लेते समय मेरे से, तो मैं क्यों दूंगा? आप बेटा वो तो मैं पूछा नहीं था, क्योंकि मैं समझा बारिश नहीं हो फसल हो जाएगी, तो फसल की वजह से मैं उसका पैसा दे दूंगा. पर फसल ही नहीं हुआ. इस बार बारिश आया तो उसकी वजह से सारे फसल खराब हो गए. नहीं दे सकता मैं, आपने नहीं पूछा तो आप ही देखो. ठीक है बेटा. अबे यार अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मैंने बेटा से पैसा भी मांगा, वो ने पैसा भी नहीं दिया यार. लगता है अब मुझे मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हूँ यार. लगता है अब मुझे अपनी जान देना पड़ेगा. पापा क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ, चलो. क्या हुआ? सुनना बेटा, मैंने 2 लाख का लोन लिया था. हाँ बेटा, क्योंकि मैंने समझा कि फसल होगा तो उसकी वजह से मैंने उस बैंक वाले को पैसा दे दूंगा, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है. कोई ना पापा, आप टेंशन मत लो. मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूंगी. मैं कमा भी रही हूँ, मैं आपकी मदद करूंगी. हम मिलके कर लेंगे. तू कैसे देगी बेटा? पापा कर लेंगे अब कैसे तो भी. अब हम ही तो आपका सहारा है. हम नहीं आपकी मदद करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है बेटा. लगता है अब मुझे सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो आप पैसे दे देंगे. थैंक यू. आत्महत्या आत्महत्या हा उपाय नाही आहे, तर ही चांगल्या आयुष्याची बर्बादी आहे. सो त्यापेक्षा आत्महत्या केल्यावरती कुटुंब उद्ध्वस्त होते, पण जर जिवंत राहून लढा दिला तर नक्कीच उद्याचा दिवस चांगला येऊ शकतो. तो अभी आप सबने हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया एक छोटा सा नाटक देखा. हमारे नाटक का उद्देश्य था कि हम आप लोगों के बीच ये जागरूकता फैला सके कि आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए. आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है. यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो अपना जीवन और अपना दुख तो खत्म कर लेता है, परंतु साथ ही साथ अपने परिवार वालों को, अपने चाहने वालों को और अपने करीबी लोगों को बहुत दुख दे जाता है. तो मेरा और हम सबका आपसे एक ही अनुरोध है कि यदि आपके जीवन में कोई भी तनाव हो, कितनी भी तकलीफ़ें, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, अपने आसपास के लोगों से बात करिए. अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से उनसे बात कीजिए. अपनी तकलीफ़ें बांटने की कोशिश कीजिए. आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आत्महत्या के बारे में ना सोचें, और हम सब साथ मिलकर इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं. याद रखिए, आपका जीवन अनमोल है. हम आत्महत्या कैसे रोकें? अपनी दोस्तों, शिक्षकों या काउंसलर से अपनी समस्याओं के बारे में बात कीजिए. तनाव प्रबंधन, व्यायाम, ध्यान, नहीं तो शौक अपनाएं. हमें सकारात्मक सोचना चाहिए. अपनी खुशियाँ, कामयाबी, सफलता, इन सब के बारे में सोचकर नकारात्मक सोच हटाना चाहिए. और हमें हमारे दोस्तों का साथ देना चाहिए. बुलिंग, रैगिंग ये सब ना करके उनका साथ देना चाहिए. थैंक यू.
Very, very, very spectacular. Touched upon many topics, right from ragging to farmers committing suicide. Very, very realistic and relevant. Once again, thank you, Symbiosis College of Nursing, for this spectacular presentation in front of us. Thank you. You know, one thing is universal, which is music. It heals the soul. Yeah, it is a very, very powerful tool, powerful medium, which amplifies healing to a large extent. Very, very happy to invite now on the stage. It's actually initiated by one of our volunteers, Lorraine, and her group to present beautiful, soulful music that will conclude this evening. May I request Shaila to please come on the stage. You need this? Thank you. Good evening, friends. I'm sure you're all enjoying the warmth of this candlelight evening as much as I am. Hi, I'm Shaila, your host for this last segment. And along with our singers, we're truly happy to welcome you to this short, uplifting musical program. Merlin and Jerry will be singing a few songs that resonate with the compassionate work of Connecting Trust, an organization dedicated to saving lives through listening and care. Before they begin, I'd like to share something noteworthy. Connecting Trust runs 2 distress helplines, where people struggling with emotional distress or even thoughts of suicide can reach out anonymously, knowing that their words will be respected and not judged. Very often, by the end of a call, our callers tell us that they feel a little lighter simply because someone truly listened. And now, I'd like to request Jerry to perform the song, You Raise Me Up, an inspiring piece with a message of hope, comfort, and courage in tough times. It beautifully captures what many callers feel when they unburden their hearts and souls. The relief of being heard and the strength that comes from compassion. Come, step into the world of a caller and feel what it means to be supported through presence and listening. Thank you, Shaila. Good evening. How are you? How are you? That's a better answer, yeah. This song is one of my favorite songs, and I would especially like to dedicate it to Connecting and to all of you, because you epitomize the lyrics. You are the inspiration. You personify, you raise people up. And that is what this song is all about. So sit back, listen. If you want to close your eyes, that's also fine. But I'm happy to be here to share it with you.
fall so weary when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, in you I find the strength that carries me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Thank you. Thank you, Jerry. Every connecting volunteer carries an inner spark, a quiet but powerful commitment to touching lives and making a real difference. Their light shines in so many ways, through a kind word on the helpline, the warmth they bring into a classroom, standing beside survivors with compassion, or spreading awareness about suicide prevention in their communities. Wherever they are, they reach out with their hearts. As Merlin sings, "Go Light Your World," we invite you to join us in a simple but powerful moment. I request you to switch on your torchlights again on your phones. Hold them high above our heads and gently wave it
to the music. Together, let's fill this room and the world beyond it with light, hope, and the reminder that none of us have to walk through the darkness alone. Sorry, it's just... There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, the confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds her candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and warm. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. We are a family whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky. Bring hope to the hopeless, care to the lonely, make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Come on, everybody, let's sing it. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hope.
want the last one? Okay, we'll sing the chorus again. You all have to sing with me, okay? So carry your candle, run to the darkness, run to the darkness. Seek out the lonely, seek out the lonely. Confused and torn, confused and torn. Hold out your candle, hold out your candle. For all to see it, for all to see it. Just take your candle, take your candle. Go light your word, go light your word. Take your candle and go light your word. Thank you. Thank you, Merlin. In a world that often feels heavy with sadness and hopelessness, what people long for is often just a little light to guide them at the end of the tunnel. A spark of hope to brighten the daunting path ahead. That's where Connecting Trust steps in. We are here to stand beside people in emotional distress, helping them find their way until hope shines right back into their world again. We will now sing Ashai. It's a very famous song, and I'd like if all of you sing with me. We'll be singing one verse of Ashai. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर गोश में हो आर बार, करी दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Once more. आशाएं खिले। Come on people, raise your hands. उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओ, Come on, connecting volunteers out here. उड़ जाए लेके खुशी, अपने संग कुछ को बहा, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओ, लेके खुशी, अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो,
कुछ भी नहीं, कुछ भी। Hi. No, don't leave, don't leave. Stay right there. Come on, friends, let's stand together. And if you'd like, join hands as Merlin and Jerry sing Heal the World, a song dedicated to the spirit of connecting trust and its mission to make the world a better place for you, for me, and for everyone. We'd love to invite all of you to come forward, form a circle of togetherness, and stand with the music hand in hand, affirming our shared commitment to connecting's vision. A world where everyone is connected to a life of dignity and compassion. If you can keep it in the front. Yeah. Check, test. It's fine. A little silence from the audience as they sing. Thank you. There's a place in your heart, and I know that it is love. There's a place much brighter than tomorrow. If you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Want to know why? There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life? Will this earth crucify its soul? We know it's plain to see this world is heavenly. Be God's glory. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if we cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place
world and make it a better place for you and for me and the entire race. There are people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. 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 Whoa! Thank you. Thank you, everyone. Fabulous, fabulous, fabulous. One of the best evenings of my life. Thank you, everyone, for making it so special. Okay, the program is not over yet. Please take your seats. Sorry? Okay. So, first of all, this function was a big success because of our own Gayatri. She has really 3 cheers. 3 cheers for Gayatri. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Thank you, Gayatri. God bless. 3 cheers for CYDA. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! 3 cheers for Symbiosis. Hip hip, hooray! Woo! 3 cheers. Hip hip, hooray! One more. Hip hip, hooray! And 3 cheers for the Rotary group. Thank you. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Thank you. Thank you, Suhasini. Thanks so much. 3 cheers for the singers. Yes, big, big round of applause. Great. Ah. And for connecting, of course. We need 3 cheers. Okay. So you see, guys, without partnerships, without collaborations, this event wouldn't have been successful. So all of you, thank you. Gratitude, big, big gratitude from my heart. Before we move on to the next segment, one thing I would like to mention here. Arnavas, may I request you to felicitate Sumedha? We didn't do it in the beginning. Ladies and gentlemen, Arnavas is felicitating Dr. Sumedha Bhosle with a small bouquet from us. Yes, sure. It's on behalf of the Rotary. So many clubs have participated on 11th hour's notice, and you have made this event successful. Next year we will join in large number. Rotary is always instrumental in such type of social events. I'm the district director of disease prevention and treatment, and mental health is our main aspect of these services. Thank you. Thank you all. So before we head for snacks and tea, which has already begun, Gayatri was a fabulous lead for this program, but we also had a very strong team of volunteers supporting her.
because I don't want to miss out on any names, I'm just going to say the entire team of volunteers, whether it was from Connecting, whether it was from Rotary, wherever the organization, but whoever worked hard to put this event together. You all know what you did, so put a hand together for all of you all and for yourselves as well. Vote of thanks. No, vote of thanks, Desha. You can come on the stage. Okay, so we are moving on to the very last segment of this evening. I would request Ashutosh, who is the president of Rotary Club of Sarasbag, to deliver vote of thanks and extend gratitude. Thank you, Gayatri. एक भारावलेलं वातावरण आहे. आय एम स्पीचलेस. तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. थँक्यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट. मी विनंती करतो जे आत्ता बरेच मार्चला उपस्थित होते रोटरी प्रेसिडेंट, ते आता स्टेजवर जे आहेत ते येऊ शकतील का इथं आत्ता? आणि रोटरी मेंबर्स, रोटेरियन अँड्स त्यांनी पण यावं. Dignitaries, my friends, जेव्हा मला सुमेधा भोसल्यांनी सांगितलं की आपण हा सुइसाईड प्रिव्हेन्शन आणि मेंटल हेल्थवर एक रॅली करायची आहे, तर तुम्ही पार्टिसिपेट होणार का? तर मी लगेच त्यांना सांगितलं की मी लगेच होणार पार्टिसिपेट त्यामध्ये. आणि मीच नाही तर माझ्या बाकीचे जे रोटरी क्लब आहेत, 7-8 क्लब जे आहेत ते सुद्धा विदिन 5 मिनिट्स ते रेडी झालेत. त्यांचे पण मनपूर्वक आभार. मी पहिल्यांदी रोटरीचे फाउंडर अर्नब दमानिया यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. कनेक्टिंगचे अर्नब दमानिया यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच गायत्री, प्रणिता, वीरेंद्र राजपूत, वरुण, अमिना आणि बाकीचे सगळे त्यांचे व्हॉलेंटियर्स यांचे पण मनापासून आभार मानतो मी. तसेच कनेक्टिंगचे व्हॉलेंटियर्स, फ्रेंड्स, म्युझिशियन्स, तसेच एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन, त्याच्यात मला वाटतं FC कॉलेज, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ हेल्थ अँड सायन्सेस आणि ऑल व्हॉलेंटियर्स यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. MMC. तसेच रोटेरियन्स अँड्स, रोट्रॅक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सुमेधा, तसेच RCP कात्रज, RCP साऊथ, RCP कोथरूड, RCP सहवास, RCP मिड ईस्ट, RCP सनराईज आणि RCP यमुना कल्याणी नगर आणि ऑल रोट्रॅक्टर्स 3131 हे सर्व पार्टिसिपेट झालेत. त्यांच्या मनपूर्वक मी आभार मानतो. त्यांच्याशिवाय कार्यक्रम होऊच शकला नसता. सो थँक्यू गाईज. आपल्याला माहिती आहे की आत्महत्या प्रतिबंध, सुइसाईड प्रिव्हेन्शन आणि मानसिक आरोग्य, मेंटल हेल्थ यासाठी कनेक्टिंग ट्रस्ट ही संस्था 2005 पासून कार्यरत आहे. रोटरी क्लब सारसबाग आणि बाकीचे रोटरी 3131 डिस्ट्रिक्ट यांचे संयुक्त प्रयत्नाने हा खूप कार्यक्रम सुंदर झाला आहे. तसेच पुढेही कार्यक्रम हवेत असं मला वाटतं. कार्यक्रमातील शेवट मी शांता शेळके यांची एक कविता आहे म्हणतो, कारण पाऊस नुकताच पडून गेलेला आहे. 7 पावसाची आली शहारली माती, भुई सवय आभाळाची जुळे आज प्रीती. आज पावसाच्या सरीप्रमाणेच आपल्या कनेक्टिंग ट्रस्ट व रोटरी या संस्थेचे एकत्रित प्रयत्न मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडू शकतील. 7 पावसाची आली शहारली माती, जशी ताजगी मिळते तसेच आपले एकत्रित प्रयत्न मानसिक आरोग्य क्षेत्रात नवीन आशा व ताजगी निर्माण करतात व करू शकतील. मला खात्री आहे रोटरी आणि कनेक्टिंग हे पुढं पण अशाच चांगले काम करतील.
याची मला खात्री आहे आणि त्यांनी काम एक कायमस्वरूपी असं केंद्र सुरू करावं असं मला वाटतं. सुमेधा भोसले या डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर आहेत, त्या नक्कीच पुढाकार घेतील आणि आम्ही नक्कीच त्यांना सपोर्ट करू. थँक्यू सो मच. आणि एक अनाऊन्समेंट आहे. ॲज अ टोकन ऑफ ग्रॅटिट्यूड मिसेस दमानिया एक छोटं गिफ्ट आमच्याकडून ॲक्सेप्ट करा. ही गिफ्ट जी आहे ती आमच्याच क्लबची एक ॲनेट आहे. तिने स्वतः तिच्या हाताने बनवली आहे, त्यामुळे त्याच्यामागे खूप प्रेमाच्या भावना आहेत. आणि आय होप सरस्वती जशी असते विद्येची, तशीच ती ह्या संपूर्ण कनेक्टिंगलाही विद्येच्या ह्यानी पुढे अजून न्यावं अशी मनापासून आमची इच्छा. थँक्यू सो मच. आणि दुसरं गायत्री स्टील द शो, तर गायत्रीला गिफ्ट ही पाहिजेच. गायत्री प्लीज कम. सो थँक्यू गायत्री अँड द एंटायर कनेक्टिंग टीम. जसं मगाशी म्हटलं गेलं की आपल्या ह्याच्यातल्या सगळ्या यंगेस्ट कोण आहेत, तर अर्नवाज दमानिया. सो आय वुड रिक्वेस्ट एव्हरी वन टू प्लीज गिव्ह हर अ स्टँडिंग ओवेशन. हॅट्स ऑफ टू हर एनर्जी, हॅट्स ऑफ टू हर पॅशन. Without that, such kind of big things cannot happen. We all know that mental health is very important thing in the 21st century, and she started it long back. A great visionary, a great lady. Thank you so much. Guys, we are seeing this event today, but she conceived it so many years back. I think really great vision. It is a need of the time. Everybody is bottled up today. Let's open up and yeah. Guys, it's not Arnavaz. I started it. I pushed people. And this is what you see. All my beautiful volunteers, they have done it. My staff has worked rigorously, night and day, making this a success. And thanks to most of them for making it so entertaining. Thank you, guys. Thank you. This is her humility at work again. We all of us need a leader, and she has been leading everybody. Amina, they also have a gift for you. Could you? Yeah, please, please. Viren, can you please also come on the dais? Viren has been really my right hand in the whole project. Big applause for Viren. You know, it was, let me tell you, it was raining yesterday and I called up Viren. I said, what should we do? Viren said, nothing doing, we are doing the march. So that kind of confidence he gave me. So Viren, Tushar, please join on the stage. Varun, Viren, Tushar, Suhasini, Mridula, please come up. Yeah. Amina? All my beautiful colleagues, beautiful friends, team. Amina is on the executive board of Connecting. She's accepting it on the behalf of the whole team. Yes, please. Thank you everyone. Let's
Yes, please. Give it to Viren. Acha, Viren la separate. He has a separate one. Tushar, you can give it to Tushar. Yeah, Lorraine and her group. May I request you to please. Yeah. Wonderful, wonderful performance by musicians and the whole team. Lovely, lovely. Our evening was made special because of you guys. Thank you. Thanks to Lorraine. Yes. Big, big round of applause. Thank you. Thank you, Lorraine.